this is one of those fixtures that decide who is going to be the final team that makes it to the playoff. We already have four clubs already in contention. They're kind of secured, but those two spots are still open and just could be anybody's else. Welcome, ladies and gentlemen. You are watching eISL Season 2 brought to you by Northern Gaming. My name is Fixes. I'm joined along with PT. And now we go into a fixture that will decide the fate of these two clubs. It is going to be ATK Mohun Bagan taking on Jamshedpur FC. And both these clubs have just played 6 games, so they have 4 more remaining. So still could be in contention, but for Jamshedpur FC, this is literally a must-win game. Where ATK Mohun Bagan, if they win this matchup, they are going to take themselves up to the 6th position. The first matchup that we have, TT, is going to be Vicky versus DK, and the second one we've got Afnan and Arvind going up against each other. So tell me something about these two clubs. देखिए, एटीके मोहन बगान की अगर बात किया जाए, शुरुआत इनके हुए थे शायद एक हार के साथ या फिर ड्रॉ के साथ, लेकिन उसके बाद से वो बंगाल एफसी के खिलाफ जीते थे, जिसकी वजह से वो 3 पॉइंट भी आया, प्राइड भी मिला, फ्लो भी बना और पॉइंट्स भी आया। अभी दोनों ही क्लब्स की अगर बात किया जाए तो फाइनली इधर दोनों ही ऐसे स्टेज पे हैं जिधर से हर एक गेम इनको जीतना है क्वालिफिकेशन के लिए। और बात कर ही रहे थे, उसी के साथ हो चुका है शुरू। लेफ्ट टू राइट अटैक इधर एटीके मोहन बगान देखने के लिए मिलेंगे, ऑन द अदर हैंड राइट टू लेफ्ट जमशेदपुर एफसी। सो फिक्सेस कुछ प्रेडिक्शन, आई थिंक मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं गेम। Yeah, you know what? I think the favorites will, of course, be ATK Mohun Bagan. They've had a better season compared to last, and right now, DK is in mood. Because DK this season has been brilliant, according to me. You know, has been winning games, and even on one occasion went on to defeat Shaknik. So, and yes, that was one of those games where Shaknik was not really sweating it out. But we've seen DK scoring some amazing goals, and can't really forget that Lionel Messi free kick, right? That just went past like a bullet. But when you've got Vicky against DK, we know Vicky has been a very stable player. He's been winning most of his games. And you've got a teammate like Afnan, so you're going to be happy about it, right? And for Jamshedpur FC, it's going to be a must-win matchup because Arvind hasn't been having the best of his days. This is where I think they've changed a little bit in the playing order, right? Usually we see Arvind coming up first, then DK comes in, and look at that, a little bit of a space for DK, takes that shot, does everything right. But Van der Sar and his long reach ensures that it just goes out for a corner. Yeah. Oh! What a shot! And एक बार रिएक्शंस देखिए, उनको भी पता है कि क्या कर दिया है उन्होंने। बीच में से जस्ट छुई में से धागा पिरोने की तरह बॉल लेके आ गए विद लीड, एंड उसके बाद डिफरेंस इधर बन गया 1 गोल का। विकी ऑन द अदर हैंड प्रेशर में तो जरूर होंगे, बट आई थिंक टाइम बहुत है, और जिस तरीके का गोल इधर डीके की तरफ से आया है वैसा गोल विकी भी दाग सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी टाइम के साथ ही पता चलेगा कि क्या होगा। बीच में से एम्बापे टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, लेकिन लूशियो एक बार फिर से अपना सुप्रीमेसी दिखाते हुए डिफेंस पे। And now look at that, DK again on another attack with Eusebio. Did not have a lot of passing options. Wanted to give it to R9, but eventually Virgil van Dijk comes for the rescue. And at this point, you know, DK, in fact, Vicky was clearly not expecting. Like you said, just threaded the needle over there and managed to get that goal. And can't really do anything to stop a goal like that, but Vicky can do one thing to score another. There you go, his opener coming in as ATK Mohun Bagan respond back. A very well composed goal, and he is right level with DK. Could not enjoy enough minutes of happiness over there. And a beautiful one, just whizzes past through. It's the R9, the new trophy titan icon, Ronaldo, converting that. And you know, this is where you kind of are in the face, you know, who scores the winner. Because I know these two players are quite evenly contested, because it's an informed DK that we're talking about. And he's an experience of playing the first season of eISL, so he knows what's on the line. And look at that passing go. We've seen DK make some phenomenal comebacks. You know, he loves to make those driven passes, and he more often connects it also, as he was trying to just reach through Vicky's defense.
but kind of little sound alarm there will save the day. You can see the run going in from the left wing, goes for a pass. Yes, on Capdevia, would want to press in, but instead opts for keeping things a little slow, wants to go with the build-up before he starts making more plays. या एक और मौका और उसी के साथ फिनिश। विकी जो काम अभी तक करते हुए आए हैं वो एक बार फिर से दोहराते हुए, एकदम शांति से बैठे रहते हैं जब भी खेलते हैं और शांति से गोल्स के बाद गोल्स दागते रहते हैं। 2-1 शुरुआत हुआ था डीके के गोल के साथ और अभी 26 मिनट के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, जिधर 2-1 हो भी चुका है, जिधर आगे निकल चुके हैं एटीके मोहन बगान। जमशेदपुर के लिए सिचुएशन जो है वो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ, लेकिन देखिए ये पे कुछ भी रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है। हाई स्कोरिंग मैच है वी नो, बट किसके तरफ जाएगा वो बताना बहुत मुश्किल। और एक और मौका, लेकिन इस बार गोल पोस्ट के जस्ट साइड से निकल गया। All right. So one thing for sure, ATKMB have staged a nice comeback, especially from being 1-0 down to now 2-1 up, and it's just in the span of 10 minutes they're doing it. Now TK, he's got to wake up, back to his senses. He's been creating these beautiful through passes, and we could see there was an offside there. A run, just a little too early. Otherwise, that could have been the equalizer easily, because once Kylian Mbappe just burst through, sometimes it's too difficult even for Theo Hernandez or Virgil van Dijk to catch up with him, as Vicky eyeing for that third. Beautiful heel to heel, finds that room and space and takes that shot. Wow, this is a beautiful one, very well crafted, and suddenly Jamshedpur FC, they've been hit by a thunderstorm. या जमशेदपुर एफसी के स्टार्टिंग जिस तरीके से हुआ था, उस टाइम पे मुझे लगा कि एटीके मोहन बगान शायद रेडी नहीं थे उस अटैक को झेलने के लिए, लेकिन उसके बाद से एटीके मोहन बगान जब पलटा वार करते हुए दिखे और जिस तरीके से वो अपने अटैक्स को बना रहे हैं, देखिए ज्यादा जल्दबाजी कर नहीं रहे, बॉल कंट्रोल रख रहे हैं, बॉल के ऊपर पोजीशनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिले हैं, और उसी के साथ कुछ टाइम पे शॉर्ट पासेस, कुछ टाइम पे बॉल को ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं जमशेदपुर एफसी, और उसी का ही इधर फायदा मिलता हुआ। बट कैप्टेविया के जगह पे हर्नांडेस को इतना जल्दी लेके आया गया है, शायद कहने की कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी तक, और उसी के बीच में क्या ये चेंज की वजह से बैलेंस बिगड़ेगा एटीके मोहन बगान का। अटैक में आ चुके थे जमशेदपुर एफसी, रोनाल्डो, यूसेबियो, बट नहीं, फाइनली वैन डाइक के वो गोल्डन पैर आते हुए, और उसी के साथ बॉल को इस बार के लिए तो कंट्रोल में भी रखेंगे और जो खतरा है वो भी टलता हुआ दिखेगा। Not a lot budging them, at least for this moment. Jamshedpur FC really have to get themselves back, and DK has got to do something else. He's been playing a lot on those through balls, those driven passes. Maybe he has to go a little long for the German process. We have seen DK do that in the past, right? And he's got to pull off something like that again. When especially German crosses were getting to be used more often, a lot of players were doing that. In fact, every single game we used to see those German crosses come in. Ruud Gullit goes running in and just scores a goal. But lately, as time went by, it's a skill that's very difficult to execute, right? You have to trigger the run. Like you remember, right? Google had, given us a tutorial. Trigger your midfielder, make him go for a run, and then give your ball to the left back. And then he's the one who crosses it in, and then you just score a goal. And there you go, the end of first half. And as you can see, after the end, we've come up, and it's still a 3-1 going on. A 60-40 possession for ATKMB, and they have completely just taken over. At this point, I think DK just needs to calm down and do
something out of the box over here. Try and restrict Vicky, because Vicky, he's kind of a player you would not see him doing anything flashy, but when he gets his legs on the ball, he doesn't stop till he gets to the final third and scores. या एंड यही चीज सबसे अच्छी बात है उनकी तरफ से कि वो बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल है लेफ्ट हैंड साइड से बेलिंगम रोनाल्डो रोनाल्डिनियो एंड ओह माय गॉड व्हाट अ सेव चौथा हो सकता था लेकिन बचाते हुए जमशेदपुर एफसी के लिए उनका बैंडेसार बहुत शानदार एक बॉल हकीमी टुवर्ड्स रोनाल्डो इधर स्कोर करना ही होगा बट नहीं इधर एक डिफ्लेक्शन हुआ जिसके वजह से बॉल का पावर तो बिल्कुल ही कम होता हुआ देखने के लिए मिला एंड देन बैंडेसार के लिए काम बहुत इजी था बट जमशेदपुर एफसी कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए तो सफल हो नहीं रहा लेकिन विकी बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे हैं जिस तरीके से वो अटैक बना रहे हैं बैक टू बैक हर एक अटैक कहने की देख के लग रहा है कि शायद ये गोल पे चला जाएगा और यही चीज को लेके सबसे ज्यादा कंसर्न बन रहा है इधर टीके की तरफ से पहले गोल के साथ टीके की खुशी वाओ झलकता हुआ दिख रहा था लेकिन इस बार विकी हो सकता है वो क्या वो डिफेंड करेंगे यस विकी ने फाइनली डिफेंड किया देखिए विकी का डिफेंडिंग भी काफी अच्छा है अगर डीके के बारे में बात किया जाए वो जब जब इधर अटैक पे आ रही है विकी तब अपने जो प्लेयर्स अपने जो डिफेंडर्स हैं उनके पोजीशन को खुद से मैनुअली चेंज कर रहे हैं जिसका प्रॉपर फायदा उनको मिल रहा है and you know not just that right he knows that DK is going to play a lot on those through balls so he's not letting enough of his fullbacks and centre backs just press in and this could be a beautiful cross well passed on towards Lionel Messi but no DK was prepared and thankfully saved and now has to go for a counter attack now this is it this is an on ball and there you go Ruud Gullit has to exercise patience and calm and he scores DK says calm down VK hold on it's not over yet because I feel like TT we've got a match on our hands because a goal at such a crucial impasse is going to change a lot and all he has got to do is DK score one more just like that and we've seen DK doing the plays like this he's been making it work and this is a moment of brilliance what do you do when a powerhouse like Ruud Gullit just charges in for the ball and you could see even was calm went for that little heel to heel got a little bit of extra room and space and shot the goal yes and I think ऐसे कुछ मूव्स की जरूरत भी था डीके तब से कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा सिंपल वे पे कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार हिल टू हिल के साथ जगह बनाए राइट से एक बेहतरीन शूट एंड फिनिश किए गोल के नेट्स पे वाओ 3-2 जमशेदपुर एफसी उनके पास पूरा मौका है कि वो इधर से कमबैक कर जाए बट फ्रेश लेग्स लाना चालू कर चुके हैं जर्जिनियो आ चुके हैं मेसी के जगह पे ओलीत टुवर्ड्स बेलिंगम एंड ओलीत 1-2 करते हुए दिखेंगे और एटीके मोहन बगान के पास जो एक क्वेश्चन था वो अभी कहने की तो हुआ बीच में से एम्बापे एक मौका जरूर बन रहा था लेकिन वो मौके को फिनिश नहीं कर पाए अभी भी देखिए पूरा चांस है जमशेदपुर एफसी के कमबैक के और उसी का आसार दिखते हुए ज़िनेडिन ज़िडान 1-2 एंड पूरे ट्रायंगल पे पास करने की कोशिश था लेकिन होने नहीं दिए रूड गुलिट का वो इंटरसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जिसकी वजह से बॉल अभी कंट्रोल पे भी आ चुके हैं एटीके मोहन बगान के जर्जीनी और नहीं इधर एक ऑफसाइड पे फंसते हुए देखिए थोड़ा सा ही बाहर थे बहुत क्लोज था बट हो गए ऑफसाइड और उसी के साथ बीचों बीच लाजवाब ये पास था बट माल्डीनी एक्सपीरियंस के साथ बचाते हुए नहीं तो इधर अभी के अभी इक्वलाइजर होता हुआ दिख सकता था Yeah, I think I can smell a goal in the making for Jamshedpur FC. They've been really good in the second half. DK is trying to make those plays and he's relentless, not giving up. And somewhere down the line,
this might end in a draw. Because now, the ball was not triggered correctly, right? I mean, could have been a little to the right and that would have been a goal. He would have had free space. But now this is where I think ATKMB really need to take this moment and just calm down a little bit. A little bit of more passing going on, just recycle the ball, keep shuffling around, change the sides maybe, and not give the possession to DK. Because if DK gets the ball, you know what he's gonna do. He's gonna trigger that player, go for a lob through, and he's done that time and again. And on certain instances, has also made it work. And a queue has been bossed by Jamshedpur FC, and at this point, I think Vicky has to, utilize as much time as he possibly can, because then he gets to get those fresh legs up and then goes full out on his attack, and that DK would be very hard to deal with, because he's already, making such beautiful passes with Pele. Goes for takes a shot, and yes, he's done this. It is DK magic, and Vicky is starstruck at this point, completely dumbfounded over there. And there you could see 3-4-2-1 into play. DK just went all in, and too hard to deal with a menace like that. And DK finds such a late game equalizer that has absolutely changed the momentum of this game. Turn the tides, turn the table up, because now this DK, he's looking for a winner. Yeah. फाइनली ये आखिरी कुछ मिनट टीके के लिए बहुत बहुत ज्यादा शायद ग्लोरियस हो सकता है. ऑन द अदर हैंड विकी की अगर बात किया जाए, वो पिछड़ने के बाद जो कमबैक उनकी तरफ से आया था उसको वो पकड़ के नहीं रख पाए, क्योंकि डीके बहुत ज्यादा फोकस हो गए थे. हालांकि इधर बैंडेसार के हाथ पे टच होके फिर नेट्स पे जाता हुआ दिखा था, बहुत क्लोज था, बट या गोल आना जरूरी है और वो आ चुका है. लास्ट 6 मिनट्स ये किस तरीके से चार्ज किया जा रहा है, बट गिरते पड़ते बॉल कंट्रोल अपने पास रखते हुए इधर एटीके मोहन बगान. बेलिंगम, एक गलत पास, रोनाल्डिनियो, पेले, ओ लग रहा था शायद एक और मुश्किल ना क्रिएट हो जाए, लेकिन शायद आखिरी जो अटैक है वो एटीके मोहन बगान कोशिश करे कि वो अपने तरफ से ही करे और उस पे गोल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर ढूंढ लेते हैं देन दैट विल बी अ डिसाइडर. बट ये प्रॉपर टाइम लिया जाएगा. रोडुलीत, गलत पास, मौका बन सकता है, बहुत तेजी से इधर आगे जाना होगा. ट्रांजिशन पे गए जरूर, बॉल मिल भी गया, गलती हुआ इधर एटीके मोहन बगान से. जमशेदपुर एफसी एक ग्लोरियस चांस, क्या वो फिनिश कर पाएंगे? रोडुलीत टुवर्ड पेले. नहीं. That was heart-wrenching for DK there. I mean, Vicky was taken for a ride in the second half. How could he bottle it up? He must be wondering at this point, how could he let DK score those goals there? And I knew I could sense a goal. And had this game gone for 5 more minutes, I'm pretty sure Jamshedpur FC would have taken over. But yes, as the final scoreline stands, it is 3 each apiece. And it's a tie. It's a draw. And DK again doing it for his club. From the clutches of defeat, just frees himself, embraces his way to glory, and turn finds 3 goals. And the last one was just the cherry on top. I mean, such a beautiful FIFA shown by his side. I mean, first half, if you could say, I mean, this game was a game of 2 halves, right? The first half was where Vicky just took over the game, and DK under massive pressure, because let's be honest, Jamshedpur FC is at the very bottom of the standings, and they realize that this win is much needed. If not a victory, if they could get a draw, still keep things up afloat, and it's fine, because we know Jamshedpur FC, the way they started the campaign in co-op, they've showed those instances where they could go on and start looking really threatening. So if they could replicate something of that sort, then it's going to be fine. And at this point, clubs like Hyderabad FC, they would be hoping that
Jamshedpur FC, they better get a win, because that would sort of make sure that their sixth position still remains intact. And this is where everybody is going to get their notebook up and start making all those calculations. Who needs to win? Who needs to lose? Because as we've already clarified, viewers, the top 4 spots look pretty secure. It's the fight for the next or the last 2. The whoever is going to finish 5th and 6th, they're going to make it to the playoffs. And a lot of teams are battling for that right till the very bottom. Yeah. एंड उनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, जमशेदपुर एफसी एंड एटीके मोहन बगान, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ इधर भिड़ते हुए दिख रहे हैं. जिधर एटीके मोहन बगान के पास 4 पॉइंट्स है, उसी जगह पे जमशेदपुर एफसी के पास है सिर्फ 2 पॉइंट्स. तो जमशेदपुर एफसी के लिए जरूरी है कि वो इधर से हर एक मैच जीते. हालांकि उनके पास 4 गेम्स, लाइक कहीं ना कहीं जो है 4 गेम्स थे, इंक्लूडिंग दिस गेम 4 गेम्स है, फिर भी उनको जीतना होगा. और अगर इधर से एटीके मोहन बगान जीत जाते हैं, दैट मीन्स एटीके मोहन बगान अपना जो जगह है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एरिया पे लेके जाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं. बट लेट्स सी वो क्या होगा. बट एज ऑफ नाउ जो कोऑप गेम है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर के अंदर. एक तरफ विकी रहने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ अफनान, और वो अफनान बहुत जोरदार गोल स्कोर करके गए थे. ऑन द अदर हैंड ठीक है, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको लाइक इधर फिक्सेस कि कोप पे क्या हुआ? आई थिंक अफनान को फिर से वो दहाड़ना पड़ेगा जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए थे आपके क्लब के. तो आपकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, रात को मैसेज करते हैं भाई फिक्सेस भाई नींद नहीं आ रही है, ये क्या हो गया आज. और Afnan is a wonder kid, right? And even Dougal also, last time he had come up, he also said those few snippets out of their season 1's memories. They were all in the same hotel where Afnan was the shy kid who used to be always, keeping to himself, and all these other players just got him into, their group, and then we could see the evolution of Afnan. And at 2.0 was too hot to handle. And this season we see a much mature version of Afnan, a much confident one, and he's been delivering, right? But in co-op games, right, this is where I'm kind of a little set off by how Arvind has been playing, because I remember for Jamshedpur FC, Arvind and Akash, we of course miss him. What a beautiful player he was. These two players were so nice to watch together, and both of them being from the certain circuit, and had a really good rapport with each other. This time, Arvind has been a little off, right? We haven't seen Arvind winning a majority of his games, which he used to always do. Kind of was Mr. Dependable. And this time he's been having a bad spell. So he needs to get over that, first of all, because they still have 4 more, including this 4 more matches, right? So at this point, it's not lights out for Jamshedpur FC yet. But yes, they have to ensure they get victory in every single one of them. And co-op game is going to be of the utmost importance over here. They have to, do whatever it takes. जो साम दाम दंडवेद जो कहा जाता है, वो करना पड़ेगा उनको इस समय ताकि वो जीत हासिल कर ले. But for ATK Mohun Bagan, considering how their last season's campaign went, this season looks much better. Especially after beating East Bengal FC in the Kolkata derby, their confidence has gone to new heights. And Vicky was always that player who gets those W's for his team, so W or a draw. And this time also he could manage a draw. It was not an L. So at this point, it's not something like you can say that no, ATK Mohun Bagan just messed it up. They should have won. Yeah, of course they should have won. But it's still, sharing points is much better than losing points at this point. Because the DK, honestly, TT, we got to see in the second half was the DK that you would tend to fear a lot. Because this season, I see that confidence in DK. This season, we could see him, building up such beautiful goals. And his constant pressing, his lob through balls was so difficult to deal with. Even when they went into those final third, you could see DK was forcing that one extra back pass. And then even when you thought that he's going to take a shot, no, he goes for another extra pass. And this opens up Vicky's defense. What do you do against a quick passing set like that?
And it's so difficult. Lokman talks a lot about player switches, especially in the defenses, and it's Hmm. very difficult to do so. And a lot of factors come in. Sometimes it's your ping, sometimes how quickly it gets registered. And if it's all in sync, then you're good to go. Sometimes you tend to just double press it, and then it kind of shifts to the wrong player, and then you know what happens, right? So that kind of went off. But yes, this co-op game is going to decide a lot of things. It's kind of a repeat Hmm. drama of what we saw in the previous game, right? CJ against V Sharma, it was a draw, and now heading into the co-op, somebody needs to go ahead. बिल्कुल एंड वही देखने के लिए तो हम लोग अभी जुड़े हैं और देखना होगा कि कोऑप गेम पे क्या रिजल्ट निकल के आता है। कोऑप गेम पे अगर इधर मैच आता है एटीके मोहन बगान की तरफ, तब मुझे लगता है ओडिशा जमशेदपुर एफसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी मैच पे जाकर अरविंद के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि I think अफनान की अगर बात किया जाए, वो लाइक एक अलग लेवल पे, अलग फ्लो पे चल रहे हैं अभी। अफनान को वो फॉर्म मिल चुका है जो फॉर्म की उनको ज़रूरत था, तो वो फॉर्म लेके आ रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अरविंद की अगर बात की जाए, वो थोड़ा बहुत प्रेशर पे ज़रूर खेलते हुए दिखे। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोऑप विल बी द डिसाइडर कि क्या ये ड्रॉ पे खत्म होगा, ये जीत जाएंगे कोई क्लब, या फिर कौन सी तरफ जाएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है कोऑप। हैदराबाद एफसी वाले तो आस लगाए हुए बैठेंगे कि भाई एटीके मोहन बगान बस हार जाए, because if हाँ। ATK Mohun Bagan gets a W, gets 3 points, then they're going to go ahead of them. तो वो छठे पायदान पे आ जाएंगे, and then that's going to be again very tough, because this is ATK Mohun Bagan's 7th game, and Hyderabad FC has already played I think 8 games, and they will be in tie with them. So considering that ATK Mohun Bagan has played one less game, so this is the point where their worst nightmares could come true. And Chennai FC is also at the 5th spot, but with just 9 points after 7 games. So even for that 5th spot, and for the 4th spot also, because Mumbai City FC, despite playing 7, they're still at 9. So yeah, the 4th spot also could be contested, but for that, some sort of miracle is needed. Suddenly, all these bottom order clubs need to step up and win all their games to make things really exciting. That being said, folks, we are set off for the co-op with ATKMB attacking from left to right. You could see the quick skill moves being chained with each other. Virgil van Dijk also being a bottle ahead. Eventually goes back with Theo Hernandez already on that overlap run. Wants to look for a pass, maybe towards Lionel Messi. Goes in, looks for a cutback with a heel to heel. Steals the ball out of Virgil van Dijk, and R9 scores. And Jamshedpur FC cannot digest Messi taking the ball away from VVD, and R9 scoring this one. What a start for ATKMB. Yes. What a start. और कुछ यही स्टार्ट की जरूरत था, बट अभी भी जस्ट गेम की शुरुआत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से गेम स्टार्ट हुआ है, उससे प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा आगे होंगे इधर जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स। वर्जिल वैन डाइक टुवर्ड्स एकदम राइट कॉर्नर पे सेबियो, ज़िनेडिन ज़िडान, एम्बापे। मौका देखिए बन तो रहा है, लेकिन माल्डिनी इधर आगे आएंगे। अगर मार्टिनी थोड़ा भी पीछे रहते तो शायद इधर एक और बहुत शानदार मौका बन सकता था, लेकिन इस बार के लिए थ्रू खिलाया जाएगा लेफ्ट विंग के ऊपर। रोनाल्डिनो अपना बहुत ही शानदार रन निकाल चुके हैं, बट लूसियो वो बॉल को खींच के लेके आएंगे। Oh God. I mean, at this point, Jamshedpur FC. Oh, nice long cross there. With Eusebio passing it on towards Mbappe. DK just pulling the strings over there, but cut off by ATKMB. They know what he's up to, and they would want to just put them down to the ground. Bit of a ball roll, but Theo Hernandez just comes charging in, steals the ball away. As now, this matchup very important. In fact, a must win for Jamshedpur FC to keep their dreams and hopes alive, to make it to the playoffs. Last time also they missed out, and this time they would not want to be doing the same. Back and forth, wanting
to go for a chance, but yeah, the ball stolen away again. ATK मोहन बगान, उनका देखिए काम इधर ही रहेगा कि वो अपने पास बॉल पूरा रखे, क्योंकि नॉर्मल सिंगल प्लेयर गेम में तो आप गोल के साथ कंसीड करना जितना टफ है उससे कई गुना ज्यादा टफ है जब आप खेलते हो कोऑप, क्योंकि उसमें प्रॉपर सिंक पे रहना होता है। और इस बार बेहतरीन इंटरसेप्शन, नहीं तो रोनाल्डो रन निकाल चुके थे। रोनाल्डो बॉल छीनते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स मेसी, पर नहीं, बेलिंगम ने प्रेशर बनाया और बॉल लूज किया। इधर जमशेदपुर एफसी फिर से एक बार अटैक पे, देखिए लेफ्ट साइड को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेफ्ट विंग को काफी ज्यादा बार यूज किया जा रहा है अटैक बनाने के लिए। क्या विंग को चेंज करना चाहेंगे? बीचों बीच से रोनाल्डो, मेसी, मेसी, ओह व्हाट अ शॉट, बट वैन डे सर उसी लेवल पे कीपिंग भी करते हुए लाजवाब स्किल मूव था मेसी की तरफ से भी, और बेहतरीन गोलकीपिंग। Oh, at this point, ATKMB having that 1-0 lead up, certainly about to make it to Jamshedpur FC or ATKMB. That heel to heel, just kind of trying to chain it and did not work out. But for Jamshedpur FC, you know, they've been one of those clubs who kind of stage a comeback in the second half. So kind of I'm hoping that they kind of do the same this time around and not let ATKMB just get away with it. Really goes in deep, looking for that cutback, wanted to slip towards the right, but Theo Hernandez has been beautiful there. Just making those right charge tackles, a little bit of a player lock coming into play with Rude Bullet still. Now this is nice. This set piece is going really well for them till this point, and oh, all right. बॉल उनसे आउट ऑफ कंट्रोल तो गया, लेकिन एक बार फिर से सिमिलर अप्रोच, बट इस बार बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन रुडुलित के साथ बहुत देर तक बॉल इधर होल्ड करते हुए दिखे, जिसके वजह से जो पास के लिए गए थे उसका उतना कुछ फायदा मिला नहीं। यूसेबियो, एम्बापे, कोशिश था रोनाल्डो को खिलाने की, लेकिन पहुंचा नहीं, और उधर से पहुंचता भी नहीं है यूजुअली। आप दो डिफेंडर के पीछे से हो, उधर से अगर पास देंगे ऑब्वियसली इधर पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो इधर डिफेंडर्स भी है वो भी इस पूरे फीफा एंटायर गेम के टॉप डिफेंडर्स है। बट इस बार मौका था, बट वर्जिल वैन डाइक कितने शानदार तरीके से जस्ट एक टच के साथ बॉल निकाल लिए। Sort of made it look too easy, right? And it's very rare you see Virgil van Dijk being bested like that, but we did see Lionel Messi doing it. So yeah, you know, the first half has been sort of a silent affair. Just that one early goal for ATKMB, and Jamshedpur FC have been relentless trying to create the chance. But look at the number of defenders present over there. Rude Hullet using his physical strength. All right, nice. Mbappe goes in for the shot. Wow, beautiful step over into scoring, and just the cusp of the half-time, Jamshedpur FC find themselves leveled up and again have gotten in fresh breath into this game. Nice piece of skill move there in the last moment, holding on, beating the defenders onto the physical level, and then that step over, that extra space, and then that shot. Beautiful. Wasn't green time, but doesn't matter. Yes. एकदम बेस्ट टाइम था इधर इक्वलाइजर दागने की। जस्ट पहला हाफ खत्म होने जा रहा था, आपने इधर कमबैक किया। कॉन्फिडेंस इधर जमशेदपुर एफसी के भी 7वें आसमान में होगा। बट एटीके मोहन बगान जिस तरीके से उन्होंने गोल कंसीड किया है, प्रेशर कहने के उनके ऊपर बनता हुआ दिख सकता है। हालांकि पोजीशनिंग के मामले में भी आगे थे, शॉट्स के मामले में भी आगे थे, एंड शॉट ऑन टारगेट भी 2 देखने के लिए मिला है। लेकिन जमशेदपुर एफसी
बहुत बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से गेम में वापसी करते हुए दिखे। और पिछले बार भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। क्या इधर इसके बाद कौन गोल स्कोर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि मैच किसके तरफ जाने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी मैच जो है वो डिसाइडर हो। मे बी पॉसिबिलिटीज तो बहुत हाई लग रहा है जिस तरीके से खेल रहे दोनों ही क्लब्स। शुरू हो चुका है सेकेंड हाफ, एंड सेकेंड हाफ के शुरुआत के साथ ही साथ जमशेदपुर एफसी बॉल कंट्रोल अपने पास ही रखते हुए, और वो अपने पास रखना चाहेंगे भी। बात कर ही रहे थे बॉल कंट्रोल की, तभी बॉल इधर गवाया गया और उसी के साथ एक बार अटैक पे जाते हुए दिखेंगे एटीके मोहन बगान। एटीके मोहन बगान ज्यादा टाइम लेते नहीं है सोचने के लिए, या तो बॉल मिलता है तो डायरेक्ट चले जाते हैं। ज्यादा वो मिडफील्ड के ऊपर बॉल टिकी टाका करते नहीं है, 1-2 नहीं करते जितना जमशेदपुर एफसी करते हैं। तो देखना होगा, डायरेक्ट अटैक तो आएगा एटीके मोहन बगान की तरफ से, लेकिन जमशेदपुर एफसी किस तरीके से खेलेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये अंतिम कुछ टाइम पे। Yeah, I think this is going to be really crucial, and trying to make those right set of passes, because it has been the so-called scenario all the time that ATK Mohun Bagan start off with a lead, and then Jamshedpur FC find their way back into this game with Eusebio looking for the right pass, but nice tight defense exercised by ATKMB, just stopping them at their tracks. And ATKMB needs to recover, really. I mean, go on, try to win this game, because when they get on the back foot, Jamshedpur FC has been always been pressing them down. So they've got to try and do few things different in order to make things work over here. With Lionel Messi has a room for a pass towards Ronaldinho, as Lionel Messi goes up towards that right wing, passes it back towards Ruud Gullit, and TKMB going for a rather slower build-up. And now with Ronaldinho, should have in fact was looking to pass there, but the player was offside, and with R9 wanted to take the shot with the left foot, but eventually was stopped over. Now this is good. This is looking beautiful, looking a little deadly. R9 needs to come up with Mbappe, has already pasted with a run beautifully. Oh, that ball roll scoop goes for an outside footer shot. Had that been green timed, could have been a different case altogether, but a nice build up by ATK, in fact Jamshedpur FC there. Yes. Finally corner in. Oh, Messi towards Ronaldinho, Hakimi, and ATK मोहन बगान धीरे धीरे करके अटैक पे जा रहे थे, बट ये लॉन्ग पासेस खेलना इस टाइम पीरियड के ऊपर थोड़ा सा उनके आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है अभी। लेट्स सी, टूडली देखिए इधर दोनों ही साइड से अपना पूरा बेस्ट दिया जा रहा है, और देना जरूरी भी है, क्योंकि दोनों ही ऐसे स्टेज पे है जिधर से अगर वो बेस्ट नहीं देंगे देन वो शायद टूर्नामेंट के जो प्लेऑफ्स है उस पर क्वालिफाई ना कर पाए। तो अभी क्वालिफिकेशन के लिए लड़ाई चल रहा है इन दोनों ही क्लब्स के बीच में, और उस पे ना कोई आगे ना कोई पीछे। हालांकि यस, ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए देन तो है गैप, लेकिन इन गेम इधर कोई भी गैप नहीं दिख रहा। दोनों ही साइड प्रॉपरली अपना बेस्ट गेम इधर दिखाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, जिधर अरविंद को जरूरत है कम बैक करने की फ्रॉम द साइड ऑफ जमशेदपुर एफसी। ऑन द अदर हैंड इधर विकी पिछला गेम तो अपना गेम तो वो संभाल चुके हैं, और अफनान हम जानते हैं कि बहुत ही शानदार खेल रहे हैं वो ऑलरेडी। बहुत क्यों किया गया है जमशेदपुर एफसी की तरफ से, शायद फ्रेश लेग्स आते हुए देखने के लिए मिले, बट ये गलत पास, बहुत क्रूशियल पोजीशन पे बॉल इधर छीना गया है, और बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन पे भी देखने के लिए मिल सकता है। बात कर रही है ट्रांजिशन की, बॉल दिया जाएगा बट नहीं, वर्जिल वैन डाइक अलाउ नहीं करेंगे इधर रोनाल्डो को कि वो इधर बॉल रिसीव कर सके, और उसी के साथ वो अटैक तो टूटा, बट इस बार काउंटर पे आ चुके एटीके मोहन बगान। बहुत ही रैपिडली पूरा जो सिनेरियो एंड माहौल है वो दोनों ही चेंज होता हुआ दिख रहा है, और इधर भी डिफेंस किया जाएगा बहुत लाजवाब तरीके से। Yeah, I think somebody needs to take that risky change, right? Somebody needs to go on a 3-4-2-1. Somebody needs to find that winner. It's already 75 minutes in, and
think even ATKMB would want to pause at this point. And they know Jamshedpur FC have queued it, so it's fine. And I think Jamshedpur FC, they've been looking more threatening than ATKMB, to be honest, because Jamshedpur FC's defense has been really nice and has been tight, and their attack, the runs they've been making are just phenomenal. And this is the point where ATKMB needs to realize that this victory is going to at least keep them as a front runner in the game, as with Mbappe. Oh, just gave up too early. Oh. And again, our worst fears have come true at such a crucial moment in the game. We've been hit, slapped again, and it's been kind of customary in the two co-op games that we've had and now at this point we are back again. So, and this is one of those points where I did not want to crash, right? And yeah, like I've already said, we can't do anything about it. But yes, how this game was going, this is the point where I think, in the last game, you had seen RDK going for a 3-4-2-1 formation. And ever since, he had been, the pressure that was kind of quadrupled on Vicky. And it was too hot to handle there. And this point, both these teams are at the same stage. Both these teams need a goal. So somebody needs to take that first step in trying to go a little attacking, trying to take that risk. Because if you're talking about getting another draw in this game, then what do we have for the next matchup? It is going to be a must win. Now, Afnan going up against Arvind there. This is something that's going to be really interesting to watch. But nonetheless, I think so far the game's been kind of a little stale from ATKMB. Not a lot of innovative plays being brought up. They've been trying to do the same routine. And it's just that Jamshedpur FC have been defending back. And then Jamshedpur FC, they have been playing on those throughs. So somebody has to do something different to clinch a victory. What do you think? Yeah, and बहुत ज़्यादा सिमिलर गेम चल रहा था. वो चाहे एटीके मोहन बगान की तरफ से अगर बात किया जाए, बार लेफ्ट विंग के ऊपर ही गेम देखने के लिए मिल रहा था. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें इधर जमशेदपुर एफसी की, तो उनके तरफ से कहने की कोशिश तो किया जा रहा था कि कुछ अलग अलग तरीके से अटैक बनाया जाए, बट वो हो नहीं रहा था क्योंकि उनका प्रॉपर एंडिंग देखने के लिए नहीं मिला. वो बनता हुआ था, मतलब शुरू तो सब हो रहा है लेकिन एंड बिल्कुल भी नहीं हो रहा. तो वो चीज़ कहने की जो है वो अभी तक ज़्यादा रिजल्ट लेके नहीं आ पाया था. बट जो एंडिंग गेम है, आई थिंक ये गेम तो शायद ड्रॉ पे ही ख़त्म होने वाला है. जिस तरीके से हम लोगों को चलता हुआ दिखा था वैसे वो हम लोगों को रिजल्ट पता चलेगा. बट या ये बात तो है कि जिस तरीके से अभी तक पूरा सिचुएशन देखने के लिए मिला, देखे तो लग रहा था कि शायद ड्रॉ पे ही खत्म हो जाएगा. अगर ड्रॉ पे खत्म नहीं होता है तो वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी तरफ जाएगा गेम, क्योंकि दोनों ही बीच में थोड़े बहुत अटैक बना रहे थे. सिमिलर हो रहा था, सिमिलर एटीके मोहन बगान की तरफ से हो रहा था कि वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी कभी कभार बॉल निकल जा रहा था. तो हो सकता है कि कोई भी तरफ से गोल आ जाए, बट ड्रॉ लग रहा है. आपको तो ड्रॉ लग रहा है, बट मुझे तो लगता है कोई ना कोई ने किसी ने तो लास्ट मिनट स्कोर किया होगा. बिकॉज ये जो आखिरी 10 मिनट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सिलरेटिंग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज यहाँ पे अब होते वो फाइनल सबशूट्स आते, अब वो फॉर्मेशंस में चेंजेस देखने को मिलता. एंड कोई कुछ ना कुछ एक तो रिस्क लेता ही लेता. बिकॉज यहाँ पे अगर एक ड्रॉ मिल जाता है तो मेरे से पचेगा नहीं, क्योंकि फिर वही बात आती है आखिरी गेम तक जाने वाला है, एंड देन इट जस्ट कुड कम डाउन टू एनीबॉडी. So either of these clubs would want to go into the final game with a little bit of a momentum, get that W, and then secure that draw at least. And the highlights have come up, and we get to see those goals, enjoy it once again. Because this one, we kind of did not see coming. Not a very high-scoring affair, but the second one that went in was beautiful from Jamshedpur. Yes. देखिए, आज ब्यूटीफुल गोल्स की तो कमी बिल्कुल भी नहीं था. एंड बहुत ज़्यादा शानदार हम लोगों को परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिले थे. लाजवाब कुछ आउटकम्स देखने के लिए मिले थे आज के दिन पे. लेकिन ये गोल, इस मैचअप का ये गोल शायद बेस्ट था अभी तक. बेहतरीन एक पासिंग एंड उसके बाद राइट हैंड साइड पे लेके जाके एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे फिनिश. वाओ, बहुत ज़्यादा लाजवाब था.
फिर उसके बाद क्या ये तो मुझे लगता है कि इस वीक के ओके सो फाइनली स्कोर कार्ड आ चुका है 1-1 के साथ इधर खत्म होता हुआ दिखा है। सो या जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि आखिरी गेम जो है वो होने वाला है डिसाइडर। एक तरफ अफनान, दूसरी तरफ अरविंद, और ये डबल एज मिलके कहने के एंटरटेनमेंट की तो कोई भी कमी नहीं रखेंगे। I think अभी तो इट हैज कम डाउन कि जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको वो 3 पॉइंट्स मिलेंगे एंड ड्रॉ जी। बिल्कुल भी नहीं चाहते, इवन दर्शक भी नहीं चाहते, जितने भी एटीके मोहन बगान के चाहने वाले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो पिछले साल हमारे साथ जुड़े थे एंड दे वर काइंड ऑफ नॉट हैप्पी अबाउट इट, यू नो, दे वर एट द वेरी बॉटम एंड एटीकेएमबी बहुत कोशिश कर रहे थे जब बिंद्र तेज और केटी ढिल्लों मौजूद थे उनके टीम के लिए and Binder Tej was one of the most aggressive FIFA players we have seen. He goes on scoring like 4-5 goals, sometimes 6, sometimes 7. But उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उतने उससे ज़्यादा गोल्स वो कंसीड कर लेते थे. And he took his time to get into the groove once he did. And things were too late till then for ATKMB, so they could not produce such results as their fans would expect. You know, a club with such a rich history, and you would always want to see ATKMB not just win the real ISL, also win the eISL also. And this time, I think with ATKMB, the new players that have been bought in, seems like they've got the formula correct. But have they perfected it? That's the big question. Because ATKMB in the past 2 games, what we did witness was that they're getting a good start. That's there. But the next moment, they are vulnerable to a counter, and suddenly we could see them getting equalized. A draw is still better than a loss, so it's fine for them. But this matchup between Afnan and Arvind. So Afnan, we know this lad is in form, right? He's Mr. Dependable because of what he did against East Bengal FC. And for Arvind, you know, he's been having that dry spell going on right now. He hasn't gotten back to his groove, so would be looking forward to this because we've had a little bit of a break and we saw a lot of these clubs already improving so much. So let's see on an individual level how much has Arvind improved as the game has finally begun. Left to right, off we go with ATK Mohun Bagan, led by Afnan, and from right to left, we've got Arvind from Jamshedpur FC. या शुरुआती कुछ टाइम पे इधर लिया गया है एक पॉज, शायद कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो मे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अरविंद के लिए ज़रूरी है कि वो इधर एक जीते, क्योंकि अरविंद के बहुत सारे गेम्स ऐसे गए हैं जो कि वो हारते हुए फिनिश किए हैं। सो जो 2 पॉइंट्स आए थे वो 2 पॉइंट्स भी बहुत टफ थे इधर जमशेदपुर एफसी के लिए निकालना। सो अरविंद को आज इधर चमकना होगा अगर उनके टीम को पहला जीत और वो 3 पॉइंट दिलाना है। तो हकीमी राइट हैंड साइड से पथियो हर्नांडेज इधर काफी बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहे थे। एक पास दिया जाएगा, पूरा प्रॉपर ऑन पॉइंट जाता हुआ दिखा जमशेदपुर एफसी। ओह नो, ओके सो फिर से बॉल छीना गया है, एम्बापे से बॉल छीना गया, फिर घूम के फिर से आ गया एम्बापे के पास। बट एज ऑफ नाउ ये एक मौका हो सकता था, लेकिन इधर किलियन एम्बापे के सामने जस्ट इधर आ गए वर्जिल वैन डाइक, जिसकी वजह से बॉल पहुंचा नहीं एम्बापे तक। बहुत ज़्यादा साइड टू साइड इधर गेम चलता हुआ, कोई भी ज़्यादा टाइम व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। पहला गोल बहुत ज़रूरी है दोनों ही क्लब्स के लिए। कौन दागेगा वो पहला गोल, क्योंकि ये डिसाइडर गेम है और इस पे जो जीत जाएंगे वो 3 पॉइंट लेके चले जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स है, क्योंकि दोनों ही क्लब्स के पास अभी भी चांस है क्वालिफाई करने का प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन वो तभी जब वो इधर से हर मैच जीतेंगे। Oh yeah, I mean that they have to do, right? Kind of out of options, at least for Jamshedpur FC. For ATK Mohun Bagan, you could say that they could settle with a draw, but obviously a victory is much needed. Now with Jairzinho takes that shot with R9, and there you go. Afnan opening the books again, and ATK Mohun Bagan off to a lead right from the very beginning. Nice passing routine visible, and in the first 15 minutes, Arvind, just like that, has conceded a goal. Yeah.
अरविंद बहुत चिंतित लग रहे हैं, वैसे अभी गोल खाने के बाद से नहीं, उसके पहले से ही शायद प्रेशर है उनका कि उनका फॉर्म उतना खास चल नहीं रहा है उसके वजह से। लेकिन मैं तो कहूंगा अगर प्रेशर लेके खेलेंगे फिर प्रेशर और बढ़ेगा, तो उनको यही कोशिश करना चाहिए कि वो एकदम फ्री माइंड के साथ खेले, क्योंकि जितना फ्री माइंड के साथ खेलेंगे क्रिएटिविटी उतना निकल के आएगा। और माइंड गेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है फीफा के अंदर। आप चाहे उंगलियों को जितना ही तेज यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपका माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन ना बने, देन आप गोल नहीं कर सकते, स्कोर आप मूव्स नहीं बना सकते। एक गलत पास एंड थ्रो इन, एटीके मोहन बगान के पास बॉल। Yeah. And you know, at this point, Afnan is one of those players who's not going to back off after, you know, scoring a goal, right? He goes on to score a few more. And this is something that worries me at this point. Because, again, he's getting attacking from that left wing, pass it on towards Mbappe. There you go, takes a shot. And Arvin just saved by the whiskers. Out it goes for a corner. Today we have seen a lot of corners also succeeding, right? Especially one scored by Hakimi. And with Bellingham, nice heel to heel. Oh! Had that been a goal, could have possibly been the goal of the day. Yeah. आखिरी में चिप भी हो गया था, बट वैन डे सार बचाते हुए दिखे उधर। या आखिरी 63 मिनट्स शायद अरविंद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 63 मिनट्स होने वाले हैं। वो चाहे अभी तक जीते ना हो मैचेस, अगर वो इधर से ड्रॉ भी निकाल देते हैं तब भी मुझे लगता है कि उनके पास बाकी 3 मैचेस रहेंगे जिसपे वो अगर 3-3 करके स्कोर भी किए तो 12 तक पहुंच सकते हैं। बट हार के तो बिल्कुल नहीं जा सकते, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो निकालना ही निकालना है। उसका ही कोशिश कर रहा होगा, बट कभी कभार आप गोलकीपर के इतना क्लोज चले जाते हैं, देन डिफ्लेक्शन हो जाता है। माल्डिनी पहुंच भी गए थे, बट या हुआ नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। एटीके मोहन बगान, रूड हुलीत, लाजवाब एक चैलेंज के साथ बॉल छीना गया। जमशेदपुर एफसी यूसेबियो हिल टू हिल करके निकलने की कोशिश था, लेकिन पूरा बॉडी ब्लॉक किया गया उनको। इस बार मौका है, बट वर्जिल वैन डाइक वन मोर टाइम, वंस अगेन, बट इस बार शायद ऑफसाइड था। बहुत बड़ी गलती इधर एटीके मोहन बगान की तरफ से। Yeah, and this could go punished. But thankfully, Afnan has gotten his players back. He's been looking way better. But this is where Arvin needs to strike. And indeed he does. Leveling things back again and puts Afnan to sleep. But the question over here lies, TT, is that, this is the same storyline that we are kind of acquainted to witness, right? We have seen that, and from here onwards, somebody needs to find a winner. Cannot just stay level, and it's kind of like the same storyline, right? We have witnessed in the first half also of Vicky, and in fact Vicky and DK. So this is where it's going to be interesting to see what goes on. As Ronaldinho breaks through, beautiful elastico, as Afnan does not let Jamshedpur FC enjoy the happiness of scoring an equalizer, instantly scores one more. वाह, क्या पोजीशन पे इधर फिनिश किया गया था, एकदम राइट टॉप कॉर्नर जिसको कहते हैं। लाइक अगर हम लोग इधर पॉइंटर के साथ भी बैठ जाएंगे फिर भी इधर राइट टॉप कॉर्नर था, एकदम ऑन पॉइंट। बट जमशेदपुर एफसी फर्स्ट हाफ उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डाइसी जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक गोल स्कोर उन्होंने किया है, लेकिन उसके जस्ट कुछ ही मिनट के अंदर एक बार फिर से गोल स्कोर करके एडवांटेज ले चुके हैं एटीके मोहन बगान। रूडली सेनेटिन ज़िडान, कोशिश है ओपनिंग ढूंढने की, बीच में मौका, एम्बापे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। उधर से क्या एक पास आएगा, पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसेबियो बीचों बीच मौजूद थे, बट थियो हर्नांडेज बॉडी पुश के चलते
एम्बापे को हटाएंगे और उसी के साथ फर्स्ट हाफ का गेम भी हो जाएगा इधर खत्म। एटीके मोहन बगान 2, जमशेदपुर एफसी 1। Yeah. इंटरेस्टिंग। Interesting. I think especially in those final moments of the first half, we could see some more sparks because it was kind of a repetitive showdown that also happened in the co-op game. Both these teams were eyeing out, trying to create chances, and Jamshedpur FC so far have been on the back foot. Afnan has been pretty aggro. He's been creating a lot of chances. He's got the eye for the ball every single time. He's been utilizing his wings. Even his skill moves have been getting better with time. He's been doing his heel to heels perfectly, and it's kind of really nice, to be honest, because this is where you would want, if you are an ATKMB supporter, when you know that both your players are in good form, both your players have kind of made it really close to make it to the playoffs, because now this victory will take ATK Mohun Bagan to 8 points. They will get to that 6th spot with one extra game advantage against Hyderabad FC. Now that's going to matter a lot at this point, and Hyderabad FC will be left biting their nails, because then with the remainder 2 games they have to make sure they go out with a win, and that's going to hurt them. That's going to be very difficult, especially, and you would not even expect Hyderabad FC, a club like that, with players like this, to be in such a position. या पर देखिए एक बार फिर से बहुत ही तेजी से एक अटैक बनता हुआ राइट हैंड साइड से, एक पास, सेकंड पास हो सकता है। यस, फाइनली मौका एंड फिनिश। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ प्ले। जर्जिनियो फिनिश जरूर किए, लेकिन गेम तो बन रहा था हकीमी से। वाओ, क्या शानदार वो रन था। फिर बैक पास, एम्बापे का बैक पास टुवर्ड्स हकीमी, हकीमी टू रोनाल्डिनो, एंड उसके बाद जर्जिनियो का फिनिश लाजवाब था और इसको रोकना इम्पॉसिबल था। And it's a new good birthday icon Jarzinho that we get to see, and yeah, 93 rated. If already Jarzinho was not too broken, this card even makes him better. So coming back now, this is where ATKMB have taken over, and Arvind has to do something like DK did. It's going to be so difficult over here, because a mere draw is not going to matter a lot. They have to get a victory over there. It's going to look so difficult. At this point, a pause has been queued by Jamshedpur FC. I'm pretty sure they would want to go all attacking at this point. He needs to break through. And now, if that's not an offside, a good chance is in the making. Yes, indeed has beaten his marker perfectly well, but did not have a lot of passing options. But this one looks promising. We'll go for that ball roll to a cutback. Oh. बन गया था मौका, लेकिन डिफेंडर आ गया बीच में, जो कि उनका काम है। ऑब्वियसली डिफेंडर तो डिफेंड करेंगे ही, बट इस बार बॉल थ्रू खेला गया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ, थोड़ा ओवर पावर जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया था बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ देखने के लिए मिला। बट या एटीके मोहन बगान जो गैप ऑलरेडी बना चुके हैं, आई डोंट थिंक कि इधर जमशेदपुर एफसी की तरफ से कम बैक आएगा। अगर आता भी है तो ड्रॉ तक हो सकता है, बट 3 गोल करना, वो भी जीत के जाना, इधर वो अलाउ नहीं करेंगे इधर अफनान, क्योंकि अफनान का डिफेंस बहुत सही है और अफनान बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि वो बैक टू बैक 3 गोल्स करके जाए और अफनान कुछ ना करे। ऐसा तो ना होने वाला है। बट ये आखिरी 20 मिनट, ये 20 मिनट से पता चल जाएगा क्या हैदराबाद एफसी के जो हार्ट बीट्स है वो बढ़ेंगे या फिर वो खुश होंगे। क्योंकि अगर जीत जाते एटीके मोहन बगान, देन जैसे कि आपने कहा कि हैदराबाद एफसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ज़्यादा मैच खेल के वो 8 पॉइंट पे है और एटीके मोहन बगान 7 मैच खेल के 7 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। Yeah, and at this point, I think it's going to be 8. We'll have to double check once more, because I guess they were sitting at 5. Yeah. So if ATK Mohun Bagan, if things remain as it is, they'll also make it to 8 points, and they'll be tied up with our boys from Hyderabad FC, and then
that one match difference will help them. But whatever the case is, TT, coming back to the conversation, it's now still 60 minutes. We've got 30 minutes of play remaining, and at this point, in the next 10 minutes, Jamshedpur FC need to score one. They definitely need to, otherwise it's going to be a task that will just remain incomplete. And I guess we will get our one of those teams that does not make it through the playoffs, because Jamshedpur FC, they've played just 6 games, but still they have got 2 extra games. They could go ahead of East Bengal, they could go ahead of Odisha FC, but if Afnan scores out of this one, then this could be lights out. Would just have put Arvind to deep sleep at this point. But now Jamshedpur FC, they will have to capitalize on this counter attack, going really fast, using the pace there. But Afnan has done pretty well in terms of his defense, has gotten his entire back line, and then tries to go for a shot with Eusebio. Even Green times it. But nice tackle coming in that final moment. A ball roll and a pass there, but well defended by Van der Sar. And Arvind is rattled. How did that not go through? देखिए पूरा कायनात अभी अफनान के साथ हो चुका है. जो भी हो रहा है वो अफनान के तरफ से ही हो रहा है पॉजिटिव, और जो मौका इधर अरविंद के लिए बन रहा है वो हो नहीं रहा कन्वर्ट. Eusebio delete Zidane धीरे धीरे करके अटैक बनाने की कोशिश था, बट नो, नहीं हो पाएगा. बीच से बॉल छीना जाएगा और एक बार फिर से एटीके मोहन बगान अपने कंट्रोल में रखेंगे. अभी सिर्फ और सिर्फ इधर से मात्र टाइम बचा है सिर्फ 16 मिनट्स का. बट ये गोल होगा कि नहीं फाइनली बचाते हैं, क्योंकि अगर ये गोल हो जाता देन शायद वो ड्रॉ करने का भी चांस खत्म हो जाता. बट अभी आखिरी 15 मिनट सरवाइव करना होगा एटीके मोहन बगान को कहीं ना कहीं इस गोल्स के साथ, ताकि इधर गोल कंसीड ना करे. ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी, उनको बाय एनी हाउ कमबैक की जरूरत है. Yeah, I think we are at that moment. This is where Arvind has to break free. Because I was speculating it was 61st minute, they needed to score in the next 10, which did not happen. I mean, he almost created a chance, but I thought at that point, Arvind should have just gone all out, could have gone, 3-4-3, 3-4-2-1, whatever suits him. 4-2-4 also, and just could have tried to apply intense pressure on Afnan. And Arvind, the previous chance that he'd created came out of a counter attack. So Arvind needs to start first getting the possession back, and then he's got to hit a bullseye, because no other way I do see Jamshedpur FC coming back from this. And Afnan, we know, earlier you could have said this player in the first season could have crumbled under pressure, but this Afnan, he's made of steel, and he keeps on hurting you, just pinching your wounds there, applying a little bit of salt, making it a lot worse. As another attack in the making with Ashraf Hakimi, wants to replicate CJ's goal tonight, but finally Arvind just thwarts it away out of danger, as Vinicius Jr. also had come in, but with Ronaldinho making that run, has a passing lane on towards R9, gives it and still wants to go for an extra pass, but sadly has been defended. Yeah. वो गोल हो नहीं पाया जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे. बट अभी मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई कर देना चाहिए. दूर से शॉट ले लो, कहीं से भी शॉट ले लो, बट शॉट ले लो. अगर आप शॉट्स नहीं लेंगे देन तो आप ट्राई नहीं कर रहे हो. तो शॉट्स की ज़रूरत है इधर गोल करने के लिए. बट उसके बीच में एक और मौका, रोनाल्डो है, रोनाल्डो शॉट ले भी सकते हैं, लेकिन हकीमी द सेवियर, वो अगर नहीं रहते तो एम्बापे के पास बॉल जाता, और एम्बापे उधर अगर बॉल उनको मिलता तो उनके आंखों में सिर्फ लड्डू दिखते और गोल. बट एज ऑफ नाउ आखिरी 4 मिनट पे 3 गोल स्कोर करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है. एंड जिस तरीके से खेल रहे, एक गोल भी करने नहीं देना चाहते इधर अफनान. Yeah, I think it's sort of safe to say that it's done and dusted. Will be an offside, but does not concern Afnan, because he's done the heavy lifting, he's worked things out, he's been the star of the night and has rescued, or rather given his club those much valuable 3 points. Maybe he finds one in, but no.
that doesn't happen either. And with this, I think Afnan pretty much has ascertained his victory and would just want to let the ball pass. And there you go, makes his press. He's happy. He's done the job for his club as ATK Mohun Bagan get those crucial, very valuable, much needed 3 points that they were looking out for. And Hyderabad FC at this point, they would be sweating because ATK Mohun Bagan right on their tails, right, breathing right under their nose. And with one less game, TT, we know the outcome. This could go wrong for Hyderabad FC, and this would be so gutting for them. Because when I saw Varsi and Genesis there, I thought that, yeah, this team's gonna go top 4, no caps. But such has been eISL, such has been the beauty of this campaign. Because, again, when you look at Kerala Blasters FC, you find a really strong team. But they've also had a bad season in the eISL so far. A season full of surprises. And FC Goa, I mean, they were a really good team on pen and paper, but this good, nobody expected. And we are kind of yet to find our dark horses of this tournament. A club considering of 2 players whom most of the people might have written them off, but will come back to. Because so far, what I can see, the teams on players in the top 4 are kind of the anticipated, the usual bunch. Nobody has broken through. And I think ATK Mohun Bagan could be one of those clubs that, kind of puts a few surprises out there. Especially with how stable Vicky has been and how stellar Afnan is. This club could go on to be the dark horses of this tournament. Yes. और उसी के साथ देखिए एटीके मोहन बगान को जो 3 पॉइंट्स की जरूरत था वो उनको मिल चुका है और जो डिसाइडर मैच है उस पर डिसाइड हो ही गया कि इस पूरे मैचअप का विनर कौन है और वो और कोई नहीं, वो है एटीके मोहन बगान। लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत जो है वो उतना खास नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जितना टाइम आगे बढ़ता गया परफॉर्मेंस भी उतना ही ज्यादा निखरता गया। स्पेशली अफनान का फॉर्म में आना, ये इनके लिए सबसे बड़ा एसेट था इस पूरे इंटायर सीजन के अंदर, क्योंकि अफनान अगर नहीं आते फॉर्म में देन शायद बहुत कुछ नहीं होता इस पूरे सीजन में एटीके मोहन बगान के लिए। बट ऑन द अदर हैंड विकी की अगर बात किया जाए, वो अपना पेशेंस बजा के लाइक पूरा जो है वो रखते हैं, अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से जो आउटकम्स है वो दिखाए हैं। विकी हालांकि बहुत कम गेम्स हारे हैं, लेकिन जो हारे हैं उसके बाद अफनान की तरफ से उसका कमबैक भी दिखा है। सो ये 7th गेम हो गया एंड 7 गेम के बाद एटीके मोहन बगान अभी काफी बेहतर पोजीशन पे है और शायद हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक और मैच जीत जाते हैं देन वो अपना पोजीशन जो है वो एक सिक्योर करते हुए दिख सकते हैं। Yeah, I mean, they're literally tied with Chennai FC and Mumbai City FC also at this point. In fact, just 1 point short, I guess. My apologies there. But yes, he's the MVP over here. Afnan, I mean, remember this name, the Wonder Kid, who always fills our heart with joy. That a nervous Afnan in transitioning into a confident Afnan to a much lethal Afnan. We have seen this lad grow, and what a player he is. Now has been the hero for his team on multiple occasions, especially winning them the Kolkata derby. I mean, that was a night he would not forget. It was a special one, and I'm pretty sure the ATKMB fans do have a hero's name to chant while they're in the fields. But yes, coming back, with how things have now boiled down to Jamshedpur FC, still struggling to find a victory over there. The low, the bottom order teams still have, I think now for them it's all must-win matches. They cannot afford a draw. They cannot afford or lose nonetheless. So they'll have to go on to win. But with ATK Mohun Bagan, they're now in a much better position, to be honest. And at this at this particular area, you could see that ATK Mohun Bagan
would be really happy with their victory. Yeah. And from here onwards, where do we go from this? Because now just few handful number of games remaining for all these clubs. For some clubs, it's just 2 games. For some clubs, it's just 3 games. And eventually, as things boil down, we'll find our top 6. Because I was kind of speculating that the top 4 is secure, but that's not the case. Even Mumbai City FC is not completely in safe waters. And tomorrow, I think we will get to see them in action. But despite that, from what happened in this particular game, it was completely just Afnan taking over, and Arvind. There were a few instances where he was trying and trying, but I guess the midfield battle, the plays that Afnan made from the wings, and the confidence you could see, and combine that with how clinical Afnan was in the final third, ensured the victory. It came down to a decider in the final game, and ATK Mohun Bagan went on through with the win. As we take a look at the leaderboards, the moment of truth as it appears. So there you go. ATK Mohun Bagan have taken on the 6th position out of Hyderabad FC. And now they've got 9 points, in fact. So that's really nice. Because from here onwards, I think ATK Mohun Bagan would be in a nice position. Hyderabad FC, I was thinking that it would be a tie, but that was not the case. So Hyderabad FC have now been out from their safe zone. Now they're in the danger area. And that too, look at this TT with 1 less game played. Yeah, and कहीं ना कहीं जो उसी के साथ एक बहुत ही अच्छा खासा कहीं ना कहीं एक पोजीशन बन चुका है कि मोहन बगान के लिए लाइक स्टेज रेडी है, जस्ट उनको स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है. परफॉर्म तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं और इस बार कहीं ना कहीं मौका आ चुका है वो लास्ट 3 गेम्स का, जिस पे आके उनको अपना बेस्ट जो आउटकम है वो निकाल के लेके आना है. Yeah, in fact, to just sum up this entire day, the biggest heartbreak or the biggest upset would be for the Bengaluru FC fans and also for the Jamshedpur FC fans. But at the end, today it all panned down, because as we kind of inch in close to the playoffs, things are definitely getting heated up. But with that being said, folks, we are finally done with all the matches for the evening. We're going to be calling it a night. We'll be seeing you tomorrow, same time. So don't forget to tune in. Till then, have a good night.